ये सिंपल रीडिंग है जी। और वहाँ 191 में सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए लिख दिया गया कि आइन में भी हो सकता है और लॉ में भी हो सकता है। तो ये उन जमाल साहब की अंडरस्टैंडिंग गलत है, तो जरा समझा दीजिए। नहीं, बिल्कुल सही। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ सब्जेक्ट टू यूज होता है वर्ड, वहाँ ऑलरेडी के कोई रूल इसके वायलेशन में नहीं बन सकता, which is already existing, subject to constitution, subject to law, already substantive law exist करता है। उसमें आपकी रेगुलेशन और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे आप नो तो रूल आप फिर इसमें अगर नहीं यूज किया गया तो इसका मतलब ये इसको सब्जेक्ट ताबे नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका इंटरप्रिटेशन जी, है। इसको ताबे नहीं किया जा रहा है, but still no rule can be made in violation of the constitutional provision or any law. ठीक जी, Mr. Zubairi, is Hello. it so that it is the only Supreme Court which can make rules under Article 199? High Court and Federal Shariat Court, they are having the same powers? the 202 of the constitution gives the power to make rules to the high court, sir. And is there any law made for those two courts? उनके अपना procedural laws हैं high court में, and that judgment of a single bench judgment was cited by Mr. Bhandari on the last date, PLD 2021 Lahore, which deals with what is the meaning that rules can be made, but they are no, they have to be read with anti 55 does not apply to them, because that's why the rules of law reforms ordinance की बात की थी. Parliament has put up clog on the Supreme Court. Why not the High Court and the Federal Shariat Court? The High Court में है What were those 202 special sir. reasons to constitute this act? Sir, 202 kindly be seen. Subject to constitution and law, a High Court may make rules regulating the practice and procedure of court or of any court subordinate to it. So 202 is 203J is the जी, Federal Shariat Court. जी, 203J. नहीं, आप माय लॉर्ड का सवाल नहीं समझे। आपका पहले वाले सवाल का जवाब ये था क्योंकि रूल्स बन गए हैं तो अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज बीन रेंडर्ड इफेक्टिवली मीनिंगलेस। माय लॉर्ड का सवाल ये है, अगर आपकी ये बात सही है तो सुप्रीम हाई कोर्ट के कौन से रूल्स और फेडरल शरीयत कोर्ट के कौन से रूल्स बन गए थे, तो ये फिर इसका जवाब क्या होगा? ये मैं इसका जवाब आपने नहीं दिया। सर, पहले मैं आपकी बात का वो जवाब दे दूं। नहीं, मैंने सवाल नहीं पूछा, मैं सिर्फ आपको माय लॉर्ड का सवाल बता रहा हूं। आपने कहा कि अब नहीं, मैं अभी भी कहता हूं, आज आप रूल्स बनाने जाएं, they cannot be in violation of the constitution, subject, they have to be subject to any substantive law. I can only use one word for it, profound. जी, but still आपने ये कहा कि मैं कह रहा हूं कि जी अब नहीं हो सकता। My lord, rule making power is a continuous power. ये समझ गए ना, मगर माय लॉर्ड का जवाब नहीं दिया आपने। जी, मैं दे रहा हूं उस पे सर। इसके अंदर भी जो लॉ उन्होंने बनाया है, that has to be subject to constitution and the law, and that is the interpretation given in the judgment of. इसके लिए तो कोई legislation नहीं हुई। The Lahore High Court in a full bench judgment, जब ये क्वेश्चन राइज हुआ था कि गवर्नमेंट ने भी लेजिस्लेशन कर दी थी और हाई कोर्ट ने रूल्स भी बना दिए थे, द हाई कोर्ट सेड यू कैन नॉट डू दैट। जी, वंस द पावर वेस्ट्स इन द हाई कोर्ट, the government or the legislature cannot legislate in matters relating to rules, because the rule making power exclusively vests in the high court. जी, so this is अगर judgment जिस पे आई PLD 2021 Lahore page 544 and relevant portion is para 61 page 580 onwards sir. पढ़िए PLD दोबारा साइटेशन बताइए। PLD 2021 Lahore page 544 my lord para 61 आपकी बुक में कौन सा हिस्सा है? page 580 page 561 की बुकलेट में कौन सा है? जी, बुकलेट में नहीं है सर, मेरे नोट्स भी हैं, मैंने अपनी CMA भी दाखिल की हुई है, पर क्योंकि माय लॉर्ड ने पूछा तो इसलिए मैं निकाल के लाया हूं उनसे। पैरा 61 और बात 202 पहले कोट करते हैं और फिर मैं आई रीड दिस पैराग्राफ सर। ये पेज 544 आप कह रहे हैं? 580 सर, it starts at page 544 and relevant portion which my lord's observation is at page 580. सिंगल बेंच का जजमेंट है जी, why you are citing it before full bench? तो इसमें इंटरप्रेट हुआ है हाई कोर्ट की पावर्स के ऊपर जो 202 की पावर्स हैं। होगी जी, सिंगल बेंच का जजमेंट फुल कोर्ट को साइड पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? इसमें एक लॉ बना दिया था, अमेंडमेंट लॉ और रूल्स में अमेंडमेंट कर दी थी, दैट वाज चैलेंज एंड दैट वाज सेट असाइड। काइंडली मे आई रीड लॉर्डशिप काइंड परमिशन? You want to? जी, thus the High Court have been conferred the constitutional power regarding rules and procedure
which may not only regulate the practice and procedure of a high court, but also any court subordinate to it. In exercise of this power, HC has made rules entitled High Court Rules and Orders, which contains elaborate procedure to be followed by the court subordinate to it in matters relating to adjudication of cases before civil court. Thus, not only has the High Court been delegated the power of making and amending rules in the first schedule by the court itself, but also by the Constitution by virtue of Article 202. The central question regarding power of High Court has escaped the attention of Government of Punjab while promulgating the amendment ordinance, which impinges upon the powers of Lahore High Court to enact and amend the rules. This proposition being stated for a simple reason that the amendments issued by amendment ordinance are made part of the substantive body of the court, not in the rules comprised of first schedule. Almost all of them relate to details of procedure to be followed by civil courts in adjudication of cases, which as numbered has traditionally been part of the first schedule. A grossly egregious and anomalous situation has now been created with pits and the procedure introduced by amendment against the amendments made by Lahore High Court, which now run a parallel course. There are serious contradictions between the two processes, which is most cases are irreconciled. Although, I'm reading from the last line, although in such matters considered as is not normally assigned up, but in peculiar circumstances where across the board amendments in the rules have been made by committee of the High Court only a few months, Government of Punjab is obligated to have consulted LC for purpose of reconciliation. Also, while a reference to Article 202 of the Constitution has already been made, it also by implication follows that exercise of rulemaking powers is constitutional, which resides in the High Court. Therefore, if such power has already been exercised, emerges as an unwritten rule to be followed in all such matters that is of utmost importance concern be held and the government of province. It is not only essential but also to preserve the independence of that is unique situation where judicial legislation is permissible. So this is the thing that once the constitutional power has been exercised by the court, because these rules made by this court have constitutional backing, this is what the judgments have said, it has constitutional backing. Even the rules under the Supreme Judicial Council, PLD 2021 Supreme Court page 1, page 94 says that though Supreme Judicial Council does not, the law does not allows them to make rules, but they made the rules, Supreme Judicial Council, and those rules have constitutional status. So take a look at Article 203E Ji. in relation to the Federal Shariat Court. Ji. Take a look at Clause 2. 203 capital E, Clause 2. My Lord. Yes, my Lord. The court shall have power to conduct its proceeding and regulates its procedure in all respects as it deems fit. This doesn't seem to be regulated by law. No, it doesn't, sir. So therefore, does this mean that the rule-making power of the Federal Shariat Court is on a higher pedestal as compared to the Supreme Court or the High Court? No, my humble submit, both are constitutional powers, sir. So, both the Supreme Court, the High Court have been granted. I'm just coming off from what my learned colleague was asking you about the rule-making power of Federal Shariat Court. If read literally, this would mean that the Federal Shariat Court is put on a pedestal much higher than even the Supreme Court, to which appeals lie from the Federal Shariat Court. So then there are judgments of this honorable court that if there's a conflict between a substantive provision and provision of the Federal Shariat Court, then those substantive provisions will prevail, sir. So that is also a judgment of this honorable court on this field. That constitutional provision will be higher pedestal than the provisions under the Federal Shariat Court chapter, sir. Thank you. Ji, my Lord. So my Lord, humble submission is that I was coming to that the jurisdiction aspect, sir. Jurisdiction aspect is that, yes, Article 175 gives the Parliament the jurisdiction to make law, but that law has to be read with Article 142A, which I read to your Lordship, sir, and Entry 55, sir. Does 191 confer jurisdiction or does it confer power? I'd say it confers power, sir. Because it says regulated, the most important word is that the rule make it regulate the procedure, practice and procedure. What is the meaning of regulate? 91 is not a jurisdiction conferring article. It is conferring power. Conferring article. And there is a distinction between jurisdiction and power. And that has been very elaborately dealt with by this Honorable Court in Ziaur Rahman's case, sir. PLD 1973 Supreme Court, page 49, and the relevant portion is, okay, what is the difference between judicial power and jurisdiction, sir? PLD 73? 3 Supreme Court, page 49, sir.
And I'll give you, Lordship, the citation. तुमने बनाया हुआ तो है? दो Relevant page कौन सा ऑफिसर? सर सॉरी मेरी किताब जरा मुझे नहीं मिल रही, लेकिन 73 सुप्रीम कोर्ट पेज 49 with a bit delay, but just हम पढ़ लेंगे बाद में, अगर आपको नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. My lord, and the relevant portion, my lord, will find at page 69, sir. It starts, it refers to, from 68, the case of Fazlul Qadir Chaudhary, sir. Last paragraph. Para 69, sir. And it says this, the whole page. Para 69? And the page 69, my lord. जी. जी. कहाँ से पढ़ें? जी. कौन सा पैराग्राफ? जी, para D, जहाँ parenthesis D, paragraph से, what the Honorable Supreme Court was saying regarding. So far, therefore, as this court is concerned, it has never claimed to be above the Constitution, nor to have the right to strike down any provision of the Constitution. It has accepted the position that it is a creature of the Constitution, that it derives its power and jurisdiction from the Constitution, and that it will even confine itself within the limits set by the Constitution, which has taken oath to protect and preserve. But it does not claim that, and has always claimed that it has the right to interpret the Constitution and to say to what a particular provision of the Constitution means or does not mean, even if that particular provision is a provision seeking to oust the jurisdiction of this court. This is the right which is acquired, not dehost the Constitution by virtue of the fact it is a superior court set up by the Constitution itself. It is not necessary for this purpose to invoke any divine or supernatural right, but this judicial power is inherent in the court itself. It flows from the fact that it is a constitutional court and can only be taken away by abolishing the court itself. In saying this, however, I should make it clear that I am making a distinction between judicial power and jurisdiction. In a system where there is trichotomy of sovereign powers, then ex necessity derive from the very nature of things, the judicial power must be vested in the judiciary. But what is this judicial power? Judicial power has been defined in corpus juris secundum. The judiciary or judicial department is an independent and equal coordinate branch of government, and is that branch thereof which is intended to interpret, construe, and apply the law, or the department of government which is charged with the declaration of what the law is, and its construction so far as it is written law. This power, it is said, is inherent in the judiciary by reason of the system of division of powers itself, under which, as Chief Justice Marshall put it, the legislature makes the executive execute and judiciary construes the law. Thus, the determination of what the existing law is in relation to something already done or happened is the function of judiciary, while the predetermination of what the law shall be for the regulation of all future cases falling under its provision is the function of legislature. It may well be then asked at this stage as to what is meant by jurisdiction. How does it differ from judicial power? Apart from setting up the organs of the Constitution, may well provide for a great many things, such as the subjects in respect to which that power may be exercised and the manner of the exercise of that power. Thus, it may provide that the courts set up will exercise revisional or appellate powers, or only act as a court of secession, or only decide constitutional issues. It may demarcate the territories in which a particular court shall function, over which its writs shall run. It may specify the person in respect of whom the judicial power to hear and determine will be exercisable. These are all the matters which are commonly comprised in what is called the jurisdiction of the court. It expresses the concept of the particular rest or subject matter over which the judicial power is to be exercised and the manner of its exercise. Jurisdiction has therefore right to adjudicate concerning a particular subject matter in a given case, as also the authority to exercise in a particular manner the judicial power vested in the court. In exercising this power, judiciary claims no supremacy over other organs of the government, but acts only as the administrator of the public will. Even when it declares a legislative measure unconstitutional void, it does not do so because the judicial power is superior in degree or dignity to the legislative power, but because the Constitution has vested it
with the power to declare what the law is in the cases which come before it. It thus merely enforces the Constitution as a paramount law whenever a legislative enactment comes into conflict with it, because it is a duty to see that the Constitution prevails. It is only when the legislature fails to keep within its own constitutional limits, the judiciary steps in to enforce compliance with the Constitution. This is no doubt a delicate task, as pointed out in the case of Fazl Qadir Chaudhry versus Shah Nawaz, which has to be performed with great circumspection, but it has nevertheless to be performed as sacred constitutional duty when other state functionaries disregard the limitation imposed upon them or claim to exercise power which the people have been careful to withhold from them, sir. So this is the difference between jurisdiction and judicial power. The power exercised under 191 is a constitutional power vesting in this court to regulate the practice and procedure of the court, and Parliament cannot interfere in that because that's exclusively given. If it was, then it would have said until the Parliament makes the law, the Supreme Court can make the rules of procedure, etc. These kind of words were not used. Where the Constitution specifically uses these words, then the law is being given. But it says subject to, that is implying there's not an enabling provision, it's a restrictive provision. This is my humble submission. As my Lord, anything else? Ji. Mr. Zubairi, the similar principle was reiterated in Sharaf Afridi's case. Ji. That was regarding independence of judiciary, and that was separation of judiciary, PLD 94, Supreme Court, page 105. Added note by Salim Akhtar. Ji, sir. Yes. Ji. And it was coming from a larger bench of the Sindh High Court, 89 Karachi, page 404. The judgment was upheld, authored by my Lord Ajmal Miazi then was, sir. My Lord. Yeah, I think if you argue in context of Pakistan and what's happening and why presumably the legislator enacted this law. I understand, sir. No, you're not. Now let me pose a certain queries to you. This, they are giving a right of appeal. Now we're talking about the right of appeal under 184(3). My Lord. Correct? Yes, my Lord. अब 184(3) में जो हक दिया गया है अपील का, आपने बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे कि 184 कैसे इस्तेमाल किया गया है। ठीक सर। ठीक है, या तो कहिए बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है, या कहिए बिल्कुल गलत हो रहा है, या कहिए कभी सही हो रहा है कभी गलत हो रहा है। कुछ तो बयान कीजिए ना, क्योंकि आप तो हमारे सामने पिटिशन नहीं लाए। मुझे समझ नहीं आ रहा है आपकी एंग्जाइटी क्या है इस लॉ से। वजाहत से बात कर दें तो हम समझ जाएंगे। अब सवाल अभी तक आया नहीं है। 184(3) जो है ना का इस्तेमाल कैसे हुआ है पाकिस्तान में, हकीकत क्या है? ह्यूमन राइट्स सेल, कोई रूल में उसका तस्करा है बताइए, है किसी कानून में उसका तस्करा है बताइए, है। अभी तो हम चले पार्लियामान को तो छोड़ दें, हमारे अपने रूल्स में उसका तस्करा है। अब 184(3) जहाँ तक हेबस कॉर्पस की बात है उसका तो रूल में तस्करा है, मगर जो दूसरे इख्तियारात इस्तेमाल किए गए हैं 184(3) के तहत, उनका रूलों में तस्करा था नहीं था, कैसे इस्तेमाल किया गया। और अगर आप कहते हैं कि रूल की भी ज़रूरत नहीं उधर, अब तो हम रूल से भी चले गए ना। 191 ये तो नहीं देता है इजाज़त के चीफ जस्टिस बना सकता है रूल, या ह्यूमन राइट्स सेल बना सकता है, या तो क्या ये है। तो वहाँ तो आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। उसमें चलें, यहाँ तक बात मान लेते हैं कि अगर 184(3) में ह्यूमन राइट्स सेल बन गई होती, फिर आपकी बात में वजन होता कि भाई ठीक है 184(3) में ह्यूमन राइट्स सेल बन गई है तो उसके तहत कर लिया है, सही क्या गलत किया तो बात की बात है। तो वो बातों को तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज करना चाहते हैं कि 184(3) में, अब देखिए इससे पहले कि दुनिया हम पे उंगली उठाए, मैं अपने ऊपर उंगली रखता हूँ कि 184(3) का इख्तियार जो इस्तेमाल किया गया है, और हज़ारों केसेस में कुछ केसेस की नौयत थी कि बिल्कुल वो एक जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के आप मैटर में आप ला सकते हैं उनको, कुछ थे बिल्कुल पर्सनल हो गए थे केसेस। ठीक है, पहले आप हमें उस पर तो कोई तशरीह कर ही नहीं रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे कि कौन से रूल्स के तहत कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं चलें खैर सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अगर गलत किया तो पार्लियामेंट को तो ये गलती नहीं करना चाहिए। तो कम से कम वहाँ ज़्यादा वजन नहीं होगा कि वो तो कम से कम कानून के मुताबिक एक चीज़ करना चाह रहे हैं। यहाँ ये 184(3) का इख्तियार कैसे इस्तेमाल हुआ, भाई ये हकीकत है पाकिस्तान की। आप न्यू जर्सी ना जाइए, आप पाकिस्तान में रहिए और यहीं की बातें थोड़ी हम लोग कर लें। कैसे इख्तियार हुआ बता दें, ये आप बिल्कुल तरीक़ेकार सही था, फिर बात सही है। अगर आप कहते हैं नहीं था तो फिर आप उसकी रेमेडी, अगर एक गलती होगी फिर उसकी रेमेडी तलाश करना किसकी जिम्मेदारी है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस अदालत की है, इसके बाद शायद पार्लियामेंट की पड़ती है। अगर हमने गलती की हमें दुरुस्त करना चाहिए, अगर पार्लियामेंट ने गलती की है तो पार्लियामेंट को दुरुस्त करना चाहिए। अगर हम अपनी गलती नहीं दुरुस्त करते हैं तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है या नहीं।
आप बस सिर्फ उस बात पे खड़े हुए हैं, मगर जितनी वो जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसको वो नजरअंदाज करें। वहाँ तक तो मैं आया चाहे नहीं वो अभी, सर। सुप्रीम कोर्ट प्राइस शुगर का तयन कर ले या कोई और बातों का कर ले, फिर वहां तो रूल्स बना लेते। एक ऑर्डर था मेरा कि भाई चलें रूल्स बना ले, फिर इसको हम कर लेते हैं। तो वहां तो आप जा ही नहीं रहे हैं। तो आपका जो कंडक्ट आ जाता है क्वेश्चन में कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पीटीआई को नहीं कर रहे हैं। No, sir. आप किसको कर रहे हैं? On notice as president of the Supreme Court. अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं। जी, अच्छा, Supreme तो आपने Bar वजाहत नहीं की Association कि आप किसके लिए अपेयर हो रहे हैं। चले Sir, खैर, last ठीक है। तो तारीख में सुप्रीम, मैंने अच्छा बताया था। सुप्रीम कोर्ट का हमें बताएं ना मेरा मौकिफ नाम भी क्या। लिखा हुआ है अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौकिफ क्या है कि 184(3) जैसे इस्तेमाल हो रहा था, सही हो रहा था? तो फिर बता दीजिए ना। अगर हम इस जरा ठहरिए, अगर हम इस कानून को खत्म कर देते हैं, कलअदम कर देते हैं, तो कल मैं उसका इस्तेमाल वैसे ही करता रहा हूं जैसे पहले हो रहा था, वो सही होगा? इसका जवाब दे दीजिएगा। सब बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात में। मैंने कोई ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया। मैं आपका मौके जी, मैं- समझना चाह रहा हूँ। आप- मेरे मुंह में ना कहिए कि मेरा मौकिफ है ये। सर, आपका मौकिफ तो हम सुन चुके हैं कि आपने नहीं, क्या मेरा कहा। मौकिफ नहीं है आपने ये। कहा कि जी आप अपने पावर्स गिव अप करना चाहते हैं, आपने कहा। नहीं सर। नहीं, ये वो जी, अलग बात है। जी। ये अभी बात हो रही है 184(3) की। जी। प्रोसीजर वाली बात अलग है, वहाँ पावर की बात पहले मैं आती है। पूछा, अभी तो यहाँ 184 पे तो आया ही नहीं था मैं। अभी आप आपने 175 की जो बात हो रही है तो सर उस पे आ रहा तो 184(3) मैं तो फिर आप सवाल हो गए तो मुझे आने तो दें। 184 पे उस पे भाई आप कब आएंगे? 10:30 बज गए सर आपने जी। 11:30 तक कहा था, लेकिन उससे पहले मैं इंशाल्लाह खत्म कर लूंगा। लेकिन आपको नहीं 11:30 कहा था, सबको कहा था। अच्छा सर, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ कि 184(3) पे तो भी आया नहीं था, लेकिन बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात से कि 184(3) का गलत इस्तेमाल भी हुआ है। उस पर बहुत चीजें जिस पे बहुत सवालात उठे, लेकिन पॉइंट इज दैट बात मैं जो आर्ग्यू कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आप एक फलसफाई बात कर रहे नहीं हैं। सर, आप हकीकत में वो नहीं आपने है। पहले मुझसे पूछा कि सही इस्तेमाल हुआ गलत, मैं उसका जवाब नहीं, तो दूंगा फिर ना सर। उसका हल भी बता जी देना। हल आ रहा हूँ ना सर। हाँ। पहले मैं आपसे वो बात बता रहा हूँ जी। जो आपने मुझसे सवाल किया, उस पर हल की तरफ आ रहा हूँ। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि सर इसका सही इस्तेमाल हुआ, गलत इस्तेमाल हुआ, देखना आपको ये है कि कॉम्पिटेंस किसकी है इसको सही करने की, जुरिसडिक्शन किसकी है। नहीं, जी, मैं आप अगर देखिए, अपनी ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने अब अपनी जिम्मेदारी एकदम हम पे डाल दी। नहीं, मैं आपकी राय मैं पूछ अभी- रहा हूं तो आपने कहा देखना आपको है। आपकी कोई राय है? आप जी, मैं आ पाकिस्तान रहा की हूँ। सबसे बड़ी बॉडी हैं सर, मैं आ रहा हूँ वकीलों उस की, पे। तो बताइए आप- ना, आप अपनी एक राय बारी बताइए। जी आबिद जुबैरी साहब, जी सर। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है एग्जिस्टिंग, उसके तहत से 184(3) को ले, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, इट हैज द इफेक्ट ऑफ वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, क्या पार्लियामेंट जिसके पास वैसे इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को इनलार्ज भी कर सकती है और सप्लीमेंटल पावर्स भी कन्फर कर सकती है, क्या वो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में, एक्सेस टू जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में, इज इट bereft ऑफ जुरिस्डिक्शन? अगर सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स के तहत उसका इफेक्ट ये हो कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, सब एक्सेस टू बिल्कुल जस्टिस सही, बिल्कुल सही सर। Deny हो प्रैक्टिस रहा है। मैं 184(3) की बात नहीं कर रहा, आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का Mr. Zubairi, you had, I think, come on track, जी and I had said this in the first hearing. It is not a question of good, bad, Bad, or it is the for ugly. competence, sir. It is the question of competence. competence, who is there to correct it or who has to be here to make the law? A law जी। may be a very good law, Yes. but if somebody who is not competent to make it, जी it is in conflict with the constitutional powers, जिधर trichotomy of powers हैं। आप हमें ये competence पे बताइए कि ये मैंने- किसकी जी, competence? नहीं, वो तो बात हम समझ गए मैंने आपकी, मेरा- आपका मौकिफ ये है, वो तो बात समझ गए। मगर मेरा सवाल इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नजरअंदाज कर लें मैं आ सिर्फ रहा हूँ, सर। कॉम्पिटेंस पे। जी। तो वो आप बता दीजिए, उस पे तो जी, मैं आपको आपके हम सुनना चाहते हैं आपकी राय। अपील के ऊपर आ रहा हूँ, लेकिन पहले मैं जज साहब का सवाल दे दूं। अतर मिनल्लाह साहब ने जो पूछा, माय लॉर्ड, माय आंसर इज दैट इट्स नॉट अ मैटर ऑफ गुड और बैड और गलती, इट इज अ मैटर ऑफ कॉम्पिटेंस, वेदर माय लॉर्ड हैज टू सी दिस ऑनरेबल, दिस कोर्ट हैज टू सी whether they had the competence to even correct that thing by making this law. Then you have not crossed the first hurdle. There's a presumption of constitutionality. जी। आपने एक लॉ चैलेंज किया है जी। उसके रिपटल के लिए आपने ना स्टैंडिंग बताया है ना 184(3) के तहत सर, मैं अभी तक ये बता सकते हैं आप कौन सा फंडामेंटल राइट इन्फोर्स कर रहे हैं। आप उस मेंटेनेबिलिटी को भी नहीं क्रॉस सर, किया। मैं Now humbly हम submit- एक एब्स्ट्रैक्ट में जी। वी आर
So 191 की Arguing पहले something, देखें आपसे मैंने सिंपल एक सवाल ये पूछा है, jurisdiction of this court is not just नहीं, आपसे enforced. सिंपल मैंने एक सवाल पूछा है, जी एक्सेस टू जस्टिस जो जी। है वो डिनाई हो रहा हो, ये सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर रही हो, जी फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रही हो, कैन द पार्लियामेंट नॉट legislate? My humble submission, no, they cannot. If if the court is violating any of the rules or the constitution, then the case should be brought before the honorable before the Supreme Court to challenge that thing. That is the way to challenge the law. Any rule made by the Supreme Court, Parliament cannot make. मुझे ये बताइए, अब मेरे सवाल का भी थोड़ा जवाब दे मुझे ये बताइए आबिद साहब, जी the Chief Justice exercised his powers before this law by fixing these petitions. Why not more important petitions like enforced disappearances, other human rights issues? Now, that is a question which the Parliament wanted to address. Why should these cases have been taken first? Why not other most important cases? My humble submission is practice and procedure. Only the power to regulate the practice and procedure rule-making power vests in the court. It does not vest in the parliament to make the practice and procedure, even if there was something. ये बात आप कर चुके हैं, नई बात कर देना, सवाल जवाब देना. And the law can be challenged on two grounds: that violates fundamental rights or is in violation of some constitutional provision. That is the jurisdiction of this honorable court, not just the violation of the fundamental right, but if the law itself is in violation of some constitutional provision, that can be struck down by this court. So that is the jurisdiction of this court. That is under अब आप Article बताएंगे मेरे 199 सवाल, or अब आप 184? आबिद साहब, अब मेरे बात की High Court has also jurisdiction under 199. तो मैं लिखूं, मैं अपना लिख देता हूं. It was put to him and he is not answering Sir, it. I'm coming, but my lords, आप पहले वन बाय वन कर दीजिए. अच्छा बहुत बेहतर सर जी. अच्छा 184(3) पढ़ें सर पहले नहीं, प्लीज. मुझे मैंने जो बात की वो पढ़ तो 100 दफा लिया है. मैंने जो आपको बातें बताई उसका सर, जवाब, आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि जी अपील का हमारी स्टैंड भी है कि अपील का राइट होना चाहिए, बट इट हैज टू बी गिवन थ्रू अ मैं कॉन्स्टिट्यूशनल. ये बात नहीं की थी. मैंने कहा जितना इस्तेमाल हुआ सब सही हुआ. मैंने जवाब दिया, आपने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूं. मैं कहता हूं नहीं, अगर नहीं भी हुआ है सही अगर पूछ रहा हूं, आपकी कोई राय नहीं है. मैं कहता हूं प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बात सही भी हुआ है, गलत भी हुआ है, नहीं, दैट्स भी अपील होनी चाहिए. मैं कहता हूं आप ये मैं पूछ रहा हूँ आपकी राय में, इन योर पर्सनल ओपिनियन, अगर मगर ना करें, सीधी बात करें ना. आप क्या हुआ है, सारे सही हुआ. मैं कह रहा हूँ कि दोनों अच्छा भी हुआ है, गलत भी हुआ है. जी मेरा ये स्टैंड है. और ये मैं आपसे आपके सवाल का जवाब. ठीक है. अच्छा, अब आप दूसरा सवाल सुन लीजिए. जी आपका ये कहना है कि तरीकेकार गलत है, यही आपका आर्ग्यूमेंट है ना? ये राइट देना चाहिए मगर आइन को तरमीम लाने की, ये आपका बिग मौकिफ है. जी. अच्छा, अब सुनिए. क्योंकि जुरिस्डिक्शन ना हम बढ़ा सकते हैं और ना पार्लियामान बढ़ा सकती है. हम ये केस सुन कैसे रहे हैं फिर? जी हम 184(3) में सुन रहे हैं ना ये केस. जी. हमने जुरिस्डिक्शन बढ़ा दी जी. या क्या ये नहीं बढ़ाई? क्योंकि जुरिस्डिक्शन कर्टेल्ड है 184(3) में. दो बातें, पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. अब कौन सी फंडामेंटल राइट इन्फोर्स कर रहे हैं? आप कह रहे हैं यहाँ बढ़ा दीजिए मगर वहां ना बढ़ाइए. तो यहाँ अब ये हम केस सुनने से ही अपनी जुरिस्डिक्शन बढ़ा रहे हैं. नहीं सर, आपने ये आपका मौक़िफ़ होगा. आपकी सारी जजमेंट्स जो है 184(3) मैं आपसे अब सवाल पूछ रहा हूं. जवाब दे रहा हूं. जजमेंट करना सवाल है. 184(3) के अंदर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन भी सुप्रीम कोर्ट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, और अगर कोई कानून मुकन्ना बनाती है तो उसके ऊपर डिक्लेयर करना कि वो कानून आइन के मुतसादिम है, वो भी आपका हक है अंडर 184(3). अच्छा, जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में जब भी कोई अमेंडमेंट आ जाए तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत हो सकता है. आपका कहना ये? बिल्कुल हो सकता है. इफ माय लॉर्ड, ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया. बिल्कुल करें सर. इवन इफ इट्स नो फंडामेंटल राइट इज इन्वॉल्व. नहीं, फंडामेंटल राइट्स हो सकता है, लेकिन टैक्सेशन मैटर में वन फंडामेंटल राइट होती है. कोई अमेंडमेंट भी चैलेंज हो सकती है, वहां भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू आता है सर. व्हाट इज द मैटर? देखिए, दो कंडीशंस होती है ना सर, पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड फंडामेंटल राइट्स. इट्स नॉट आइदर और, इट इज बोथ साइमल्टेनियसली. वही मैं कह रहा हूं कि आप दोनों चीजों को देखना होगा, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को नहीं देखना होगा आपको. तो ये केस में क्या फंडामेंटल राइट है बताइए ना हमें. इसमें फंडामेंटल राइट एक्सेस टू जस्टिस का माय लॉर्ड वाज सेइंग कि कौन सा आर्टिकल बता दें, वो वाला आर्टिकल राइट टू लाइफ. राइट टू लाइफ में होल्ड किया गया है कि जी होल्ड नहीं किया गया, उसके लफ्ज में बता दें कौन से में आता है तो मैं लिख लूं. जी,
access to justice and ये independence आपने- of judiciary is being held to be incorporated in the words of Article 9. तो आप कह रहे हैं- literal reading में तो नहीं है, interpretation अच्छा of the लिटरल में Supreme नहीं Court है ना, जी तो ये तस्लीम आप करते हैं, लिटरल में नहीं है, इम्प्लाइड रीडिंग में है। नहीं, judgments of the honorable which is binding on us is says के जी access to justice since High Court बाइंडिंग, इट मे बी बाइंडिंग ऑन यू, नॉट ऑन अस। सर सिंध हाई कोर्ट बार का जो फैसला है 2009 सुप्रीम कोर्ट 879 इट इज अ फुल कोर्ट फैसला, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी आर्टिकल 9 की वायलेशन में एक्सेस टू जस्टिस इंडिपेंडेंस। चलिए ठीक है, मेरा सवाल का जवाब मिल गया मुझे। आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़े। हाँ जुबैर साहब ये बता दें कि आप करें एक्सेस टू जस्टिस की बात है, सिटीजन एट लार्ज की बात है, इस एक्ट के तहत वो कौन सी कोई ऐसी प्रोविजन इस एक्ट में है जो पब्लिक को डिबार करती है टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट? ऐसे कोई प्रोविजन है जो कह सके कि इसमें जो बात है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वी हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इफ दिस लॉ, इसमें अच्छा लॉ होगा, बहुत अच्छा लॉ होगा, लेकिन इशू ये है कि इट इज द कॉम्पिटेंस, अगर कॉम्पिटेंस नहीं थी देन इट्स नॉट अ राइट लॉ, इट इज अल्ट्रा वायरस। मेंटेनेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। इस एक्ट को देखने के लिए हमने ये देखना है कि आया इसकी कोई प्रोविजन या टोटल एक्ट किसी भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, या इसके जरिए कोई पब्लिक या किसी सिटीजन का हक मारा जा रहा है कि उसे पहले तो अपील के हक थी अब नहीं दिया जा रहा है, पहले ट्रायल के हक थी अब नहीं दिया जा रहा है, ऐसी कोई प्रोविजन इसमें है कि हम कह सके कि ये इलीगल? सर मैं कह रहा हूँ इसकी प्रोविजन आपको ये देखनी है कि क्या ये कानून साजी हो सकती जवाब थी। दें उसके बाद पहले मैं आ रहा हूँ सर, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये देखना होगा कि क्या कानून साजी का इख्तियार था पार्लियामेंट के पास टू मेक दिस लॉ। चलिए इसमें बता दें, आपने पहले कहा कि 1980 में रूल्स बने जी, वो रूल एग्जिस्टिंग लॉ के तहत बने जी, ये तो आप मानते हैं कि रूल लॉ के तहत बनने चाहिए जी, तो क्या आप बता सकते रूल बने 191 के तहत सर, 191 आर्टिकल रूल लॉ के तहत। आपने थोड़ी देर पहले जो आर्गुमेंट से आपने कहा कि एग्जिस्टिंग लॉज के मुताबिक 1980 में रूल जी बिल्कुल एग्जिस्टिंग आप प्लीज मुझे ये बता दें, मेरी नजर से तो नहीं गुजरे, 1980 में उस वक्त कोई ऐसा कानून था जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस प्रोसीजर को नहीं फॉलो करा? बिल्कुल नहीं तो था। ये रूल कैसे बने अंडर 191 56 के बने, पहले बने 1956 में। लॉ कहाँ गया सर? लॉ अगर कोई लॉ है, वर्ड यूजेस सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू लॉ मींस कि कोई लॉ अगर होता, कोई भी लॉ हो, इट कैन बी एनी लॉ, सब्सटेंटिव लॉ। आई थिंक वो 191 वाला आर्ग्यू आप कर चुके थे, जब आप 175 पे सब्सटेंटिव थे। लॉ कोई था जिसके वायलेशन में नहीं बन सकते थे, ठीक। ये मेरे हम्बल सबमिशन थी ठीक सर। ठीक ठीक, तो ये लॉ प्रोसीजर पे लॉ नहीं अगला था। पॉइंट बताएं, फिर अगर नोट कोई करें। होता If I may ask you a जी question. The equivalent to Article 184(3) of our Constitution, I think, is Article 32 of the Indian जी Constitution, मालूम which guarantees the right to move the Supreme Court for violation of fundamental rights. If memory serves me right, Mr. Ambedkar, who is regarded as the father जी of the Indian Constitution, in relation to this jurisdiction conferred on the Supreme Court, said it is the very soul of the Constitution. जी Now, if that is correct, and in India no one has ever doubted that that is correct, we are here talking of the very soul of the Constitution. yes and It seems to me that, and this is my question to you, that can a challenge to a law which, according to you, whether right or wrong, that has to yet to be decided, that is an assault on the independence of the judiciary. Is that not an assault on the very soul of the Constitution? of course because Can it be therefore put to one side simply by saying that it is not in violation of fundamental rights? no, because This my is humble the- submission is that this is what my humble submission is, that the very purpose this law, and I read that judgments, that it affects the separation of power, the doctrine of separation of powers. My law, this court has the exclusive jurisdiction. चलिए ये point आप repeat करते रह रहे हैं, अगला point and that's बताइए। why if any law which is made in violation of that cannot be, that affects the Okay, let's fundamental get on- rights of the get people of on with it, Pakistan and Mr. access to Zuberi. justice. Next point जब पे आ जाए। 180 sir, 184 की जो power, that's the original power of this court. There's appellate power is 185, sir. Advisory power is 186. Review power is 188. These are the 4 powers which are given by the Constitution. No, no, you are wrong. The other parts also. I'm talking about these are the appellate men की बात कर रहा हूँ, 4 powers की जो दी हुई है. Now, the original framing में appeal का right नहीं था. Appeal is only provided under Article 185. Now, if you want to give an appeal, my humble submission is that you have to amend the Constitution. And why? Because section आप पढ़ेंगे sir. आर्टिकल 175, 142 देखा, अब एंटी 55 देख लें सर. What does एंटी 55 पढ़ें जी माय लॉर्ड 175(2)
Article हाँ, पढ़ी, 142A and पढ़ी। entry 55 have to be read together, not in. पढ़ने 55 से कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? Jurisdiction powers all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters list and to such. Now, I'm coming to emphasize on this last part, sir, the second part of this entry. And to such extent as expressly authorized by or under the Constitution. Now, these are very important words, and my lord, I'll keep that my lord's thing. And by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction Supreme Court and conferring thereon of supplemental powers, sir. The point is that the thing, पिछले जो आपके जो लिस्ट थी उसके अंदर ये वर्ड्स नहीं थे in the 56 Constitution 62 and 72 expressly authorized by. पढ़ लिए अब आप argument develop करें. Argument is that when you read all these three provisions together, no court shall have jurisdiction except provided by Constitution or law. The 142 जो Parliament can make laws as regard. यहाँ इंक्रीज की जो बात हो रही है उस पे मैं सिर्फ एक पैराग्राफ जजमेंट इसके पावर इंक्रीज हो रहे हैं ऑन द सुप्रीम कोर्ट की पावर यहाँ आप इसमें आप कह रहे हैं ये इंडिपेंडेंस जुडिशरी खत्म हो रही है क्योंकि पावर इंक्रीज हो रहे हैं सर इट इज द मेथड द मेथडोलॉजी फिर वो मेथड वाला आर्गुमेंट खत्म हो गया नहीं सर इसमें यही है अब आप दूसरा आर्गुमेंट ले रहे हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर अपील नहीं प्रोवाइडेड थी इन द ओरिजिनल फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे डिड नॉट प्रोवाइड ओनली द अपील वाज मगर मैं फिर उसका काउंटर आर्गुमेंट ये भी दे सकता हूं कि 184(3) का इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया नहीं देखिए आप नाउ सॉरी टू से इफ समबडी albeit person not even fully authorized is doing something to help the nation, help the Supreme Court, you should say strike down because they're not following some perceived letter of the Constitution. That will be a stretch. If this power had been given to the Federal Shariat Court, if it had been given to some secretary in the government or to the Parliament even, then you could say yes. We एक appeal दे दी, in a fit of rage, a judge says, so and so political party, I hereby ban it. खत्म, कोई solution नहीं है इसका, except review, right? You know, in a fit of rage, या आपकी बात किसी को पसंद नहीं आई या कुछ ऐसी बदमज़गी हो गई, हो जाते हैं इंसान दोनों तरफ होते हैं, तो हम यहाँ बन करके वो फरिश्ते नहीं बनते, हम इंसान ही रहते हैं, फिट ऑफ रेज में उन्होंने कर दिया ये, तो कोई इसका सोल्यूशन ही नहीं। मैं कहता हूँ आप बिल्कुल होनी चाहिए राइट ऑफ अपील, बिल्कुल होनी चाहिए, इट्स ओनली द मेथड, बिल्कुल होनी चाहिए। मेथड आप मेथड विल नॉट, आप हमें तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पे चले। It's like a patient dying on the, it's like a patient dying on, सुन लीजिए, patient dying somewhere, a person received a gunshot wound and is lying somewhere on the street, ठीक है? Now, someone is not a doctor, but knows a little bit of medicine. He does something, tries to press him thing. Ideally, it should be performed by the doctor. So he said, no, don't do it. Wait for the water to come. Wait for him to die. And he, of course, he's not a doctor. He may be a quack, or he may just have seen some television shows, and he may just be applying some first aid, medical trade, who's not a doctor at all, not even a nurse, to save the person. So, इसमें ये बात हमें बिल्कुल इसको नजरअंदाज कर दें इसका आप फिर शुरू में तो आप लोगों ने अटैक कर दिया था इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट पे तो मैं तो कह रहा हूँ इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट इज गुड तो मैंने इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट को नहीं किया इस साइड से लोगों ने किया है उन्होंने कहा जी पर्सन स्पेसिफिक लॉ है हमें बता दें पर्सन स्पेसिफिक कैसे है नॉट बी डिबेटेड हियर आई नेवर सेड दैट आई सेड कि दिस लॉ मे बी वन ऑफ द गुड लॉज but the point is that the way it has been done is unconstitutional. That is my case before lordship, my humble submission. और देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी the question is where the Constitution has put up a scheme of separation of powers as to who can do what. There is a reason, there is a rationale, and there is a philosophy behind it which has been developed over centuries of jurisprudence. If we open the door, and this is a question of opening the door, if we open the door for the Parliament to interfere in every matter that the Supreme Court may or may not take up, then there is no end to it. There would be good legislation and there would be bad legislation. How do you differentiate? The differentiation is put in the Constitution by the framers. This is what you can do and this is what you cannot do. Yes. Whether you want to do something good, if the Constitution prohibits you to do it, and the Constitution does not totally prohibit you. It says if there is something which should be in the Constitution is not immune from being amended to do that good. Yes. But
to confer this power on the parliament and say whatever you do, even if it is beyond the constitution, if it is good, it's good. That is not how constitutions work. Yes. My humble ये जी ये देखिए इसमें एक सेकंड ठहरिए ना, ये जो रैशनल जो है हमारे रैशनल और रीजन और फिलॉसफी जो होती है, we tend to forget when there's trampling of boots. Then all these things, nice philosophies go out of the window. The only difference between a constitutional amendment and a law, the only difference is a numbers game. Do you have 2/3 majority? It's the very same persons doing the lawmaking, the same parliamentarians who are making law. It's no difference. It's just a question of numbers. Suppose a political party comes to power on the pledge, they're going to provide 184.3. They win the election. They don't have the numbers for 2/3 majority. So they are helpless. Even though it was a pledge to the nation that we will go, the first thing we're going to do is do this. So at the end of the day, it's a numbers game. But if it's a numbers game, then we should also realize the traumatic history of Pakistan. Irrespective of numbers, irrespective of the entire nation, one person comes and then parliament is held at whatever it is held at, and 269, 270, 270 AA, and everything is done is all right. It's a post-effect rubber stamp, done illegally, endorsed by Parliament by amendment to the Constitution. That's all right. We forgo the history. Hey, America में ये चीजें नहीं होती. When we are so particular about the full stops and the commas, then we should also say it has not yet happened in America. It may happen tomorrow. It has not yet happened in the UK other than Cromwell. So we should not forget, we should keep in mind the history of the nation also, which is a very fragile history. It's half a country today because of these acts. So let's not cripple the parliament completely when they are doing good because they don't have the numbers 2/3 majority. That's all the argument is left with. 2/3 से कर लें, ठीक है. आपका एक वोट कम है, आप नहीं कर सकते हो. That's what it boils down to that. Sir, my lord, to defend, protect, and preserve the constitution. If the constitution or the people of Pakistan, if that is the thing, then फिर हम आपसे वही सवाल पूछेंगे कितने लोगों ने किया है इसको. Then constitution gives a mechanism, a procedure. You can, my lord, with utmost respect, it is not a numbers game. It is a constitution put. The framers said that if a constitutional amendment has to be made for the people of Pakistan, because they are representing where the independent judiciary will be fully secured, then you have that number games. It is the constitutional requirement. आप सिर्फ notice में, you were not agitated enough either to vote in to have filed your own petition. You have filed your own petition. No, or you're on notice. Notice, sir. So you were not agitated enough to have filed your own petition. Some people came and filed their own petition. So if you were so agitated, you should have done it the very first day yourself. The Supreme Court, it would have been very nice to see Supreme Court Bar Association. जो cases file किए वो तो take up नहीं हो रहे जो Supreme Court वो क्यों नहीं हो रहे take up? क्योंकि आप ये केस को खत्म ही नहीं करना चाहते हैं. ऐसी बात नहीं है सर. खत्म करें. Election petition pending. The Constitution says we the people. ये excuse me जरा हमें भी question करने का time दिया जाए. Give ourselves the following Constitution. जी. Now, the people of Pakistan have said, if we want to amend the Constitution, we would do it through our representatives. argument हो गया, आगे बढ़ते हैं. 3/4. चलें ठीक है, समझ गए 3/4 का argument. चलें आगे बढ़ें. Mr. Zubairi. क्या मैं सवाल कर सकती हूँ? Excuse me. जी पूछिए जैसे. My lord. जी. The Act says that subject to Constitution and law, they have amended, they either taken the power of the Supreme Court by making rules. So what article of the Constitution they have referred to and which law they have referred to? They have referred. Amendment has been made. We are opening the doors in future for amending the Constitution. My humble submission is Article 175(2) has been read in isolation to amend this law. Basically, an amendment has been done in the Constitution amended by 175(2). And my humble submission is 175(2) cannot be read in isolation. It has to be read with Article 142A and Anti-55. अगला point बताइए. Mr. Zubairi, if I may, my lord. Mr. Zubairi, if I may ask you and follow up on what my learned colleague has said, that when Constitution is being amended, it is constituent power that is being exercised. My lord. It is a unique power, quite separate and different from the other legislative competence that is available to Parliament.
So I think what my learned colleague is saying is, if we open this door जी, of an indirect amendment to the Constitution, we are allowing Floodgate. constituent power, which is not a numbers game, if जी, I may say yes, so, with all due respect. जी, It is a numbers game because it is constituent power. We are allowing constituent power to flow into a channel which the Constitution prohibits जी, directly or indirectly. जी. So therefore, I think the point that my learned colleague has made, that this is at most, or at worst perhaps, an indirect amendment of the Constitution, which is perhaps barred by the Constitution Sir, itself. tomorrow if this law नहीं tomorrow नहीं अभी हम यही देखते हैं if this नहीं law अभी is अब upheld, ये बिल्कुल for हम नहीं example, करेंगे then the parliament can No, also no, decide no, that the no, last no, the junior no, most no, judges will no, no, जी, no. जी. Yeah, you cannot, we have a particular case, argue that. What happens tomorrow, I am not one who gives judgments on the basis of conjectures and surmises. इस पे कर लें, आप बहस खत्म कर लिया, आप वही पॉइंट्स बार बार दोहरा रहे हैं. जरा जल्दी खत्म कर लेना, आपका वक्त निकल जाएगा You are दूसरों का. representing the Supreme Court Bar Association. You are not a petitioner nor respondent. क्या आप ये बेहतर नहीं था कि आप आके कहते हैं कि जनाब इस एक्ट को पेश करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मेरे ख्याल में जरूरत इसलिए महसूस हुई कि हमने 184(3) के पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर इस्तेमाल किए, क्योंकि अगर आप इसकी वर्डिंग पढ़ें उसमें सिंपल बात ये है, फिर से अगर आप पढ़ लें, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 199, द सुप्रीम कोर्ट शैल, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any fundamental right conferred by chapter 1 of part 2 is involved. हमने जो ऑर्डर्स किए, हम तो लोगों को सजा भी देते हैं, हम लोगों को बरी भी करते हैं, हम चीनी की कीमत भी मालूम करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं. क्या ये अगर हम अपने इस डोमेन में रहें तो किसी लॉ या रूल की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल में नहीं. सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ कि जी ये आप पावर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गलतियां की होंगी, लेकिन पार्लियामेंट उसे सही नहीं कर सकती इस लॉ के थ्रू. दैट इज माय केस. अगर आप करेंगे तो आप खुद करेंगे सर, ये अपने रूल्स में अमेंड करके. सर इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर पावर नहीं, आप अपने रेगुलेट करेंगे अपने रूल्स और प्रोसीजर को. गलती अगर आप कहें तो आप उसको करेक्ट करें, आप उसमें रूल्स अमेंड, अपने रूल्स अमेंड करें, उसमें आप अच्छा चलें, आप इस बार यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ. अगर हम किसी और को मौका देते हैं, यू जस्ट रिपीट. नहीं, you want to can if you're repeating yourself, we'll ask here someone else. 184(3) is original jurisdiction conferred by the Constitution. जी. And it is the original jurisdiction, and if appeal is given, that would continuation of the proceeding before the original court. Yes. This is settled. You will have a super Supreme law. Court. जी. Any provision of the Constitution where appeal is given by a simple legislative power by the Parliament, that is permissible under the law? No, my lord, under the Constitution it is not, sir. That's my. And may I just quickly take your lordship? Sahab, how would you explain enlargement of jurisdiction? Yes, I'm coming to that. And conferring supplemental yes, my lord. powers. जी. Because you see, they have to be interpreted liberally, as already laid down by this court. Number of cases, sir. My lord, humble से एक बस एक आप करके फिर खत्म करूँगा. Directly उस पे आ जाए ना. जी. If the parliament is competent to enlarge the jurisdiction, and also to confer any supplemental yes, my humble submission is appeal जो पार्लियामेंट ने दे दी इसके अंदर, तो कल किसी चीज को भी अमेंड करके सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं. आप देखें ना, आप पहले इसको तो जरा रूल 50 अगर तो वो jurisdiction expand कर सकती है पार्लियामेंट, तो फिर उनका इख्तियार है. नहीं सर, with utmost respect, sir. How do you read? जी, I'm reading. I'll take help from a judgment of this court, 2000 SCMR, page 567, and the relevant portion is at page 617, sir. And let's read this paragraph to answer your lordships and my lords. 2000 SCMR, page 567, Province of Punjab is a National Industrial Cooperative Credit Corporation. Isme, through a provincial law, appeal was provided to the Supreme Court. That was struck down. Though a judge, or cooperative judge, was a judge of the Honorable Supreme Court, that was said, that is fine. But when the appeal was granted, it was struck down. And this is what the Honorable Supreme Court had said. My lord, kindly see page 617, para 17. Page 6? 617, my lord. Starts at 567 and page 617. And the appeal के बाद
May I just read? We lost a page. Coming now to the present Constitution of 1973, it may be of the para 17, sir. It may be observed that according to the Learned Council for the Government of Punjab, in view of Article 175(2) of the Constitution, under which jurisdiction can be conferred on any court, including the Supreme Court, by or under any law, in relation to matters in respect of which provincial legislatures have power to make laws, including cooperative societies, additional supplemental jurisdiction or powers can be conferred on the Supreme Court by provincial legislatures. The law mentioned in Article 170 includes a provincial law and additional supplemental jurisdiction on powers and form an appeal to the Supreme Court under Section 22 of the Imperial Laws being conferred on the Supreme Court in respect of a matter which the provincial have exclusive jurisdiction under the Constitution to enact laws. Now, since judgment is quoted and the finding of the court at the bottom of the page. In view of there is no ambiguity interpreting entry 55 of part 1 of Federalist Legislative List 4 Schedule of 73 Constitution. Such entry read with Articles 175(2) and 142A of the confers exclusive powers on the Parliament make laws for enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court or conferring on it supplementary powers. If entry 50 was not there in the Federalist Legislatures, it could be argued that under Article 175(2) of the Constitution, in respect of matters relating to cooperative societies exclusively falling under the comprehension of provision, a law can validly be made by a provincial enlarging jurisdiction of Supreme Court and conferring on its supplementary power. But Article 175 is not to be interpreted in isolation. It has to be read and interpreted along with Article 142A and entries in the legislative list. Under entry 55 of the Federal Legislature is competent to make laws regarding jurisdiction. Actually, you're not reading the relevant part. The relevant part are 2 lines. Ji. The last is 616. Pe last line pad lijiye, and the 2 lines following that. That's what is the answer to the present question. 616 ki last line padhiye page pe. Ji, from the aforesaid. From the aforesaid entry, it follows that under the interim constitution, additional supplementary jurisdiction could only be conferred upon by a law made by yes sir interim constitution आप पढ़ तो लेना provision तो वही है ना by a law by the federal legislature वहाँ issue सिर्फ इतनी सी थी जरा समझने की कोशिश करें ना आप जरा सुन तो लीजिए ना हजूर वहाँ सिर्फ ये बात उन्होंने कही कि जी सूबाई उसको पावर नहीं है और स्पेसिफिकली ये जुमला इस्तेमाल कर दिया फेडरल लेजिस्लेचर कर दे तो वो प्रोविंशियल बात तो हम भी मानते हैं मतलब मैं कम से कम मैं तो बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं इस बात पे उसकी एंटी 55 में एनलार्जमेंट की बात नहीं की हुई थी 72 के अभी जुबैर साहब जी इसको पढ़ लूं सर प्लीज सर अभी एक मिनट मैं आपसे इसके 4 लाइनें पढ़ लीजिए उससे पूरा जवाब आ गया इसमें 618 पेज पे आई है आ रहा हूं उसी फर्स्ट पैराग्राफ जी लास्ट 4 लाइंस हाउएवर से पढ़ दीजिए आप सर मैं यहां इसके ऊपर भी बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ दीजिए वो क्रक्स है तो उसका इशू है अदब इसका आ रहा हूं जो माय लॉर्ड्स क्वेश्चन वाज अच्छा फिर आप फिर छोड़ दीजिए फिर हम अगर आप समझते हैं आप शाम तक चलाएंगे इसके सुबह से आपको दे रहे हैं टाइम 2 लाइनें तो ये हाउएवर से पढ़ दीजिए ना दैट इज लंबे-लंबे पैराग्राफ पढ़ेंगे दैट इज द क्रक्स हाउएवर से पढ़ दीजिए However, jurisdiction of Supreme Court can be enlarged. Supplementary powers can be conferred on Supreme Court by law in view of Article 175(2) of the Constitution, entry 55, read with Article 142. Leave no doubt that the enlargement jurisdiction conferred supplementary powers can only be done through law made by federal. But ये है सर, लेकिन इसका ऊपर वाला रेशियो ऑफ द जजमेंट ये रेशियो है बस रेशियो ऊपर भी है सर अच्छा अब आप हम आपको खत्म कर रहे हैं सर एक मिनट सर एक मिनट आपने पढ़ा है दिस इज द मेयर रीस्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज रिटन हम पढ़ लेंगे ना या देखिए ये हमारा काम नहीं आप हमने बता दिया हमने नोट कर लिया सर लेकिन जो असल उसका क्रक्स वो अच्छा अगर आप सॉरी टू से अब हमें एक ही इंप्रेशन मेरे जहन में क्रिएट हो रहा है कि आप चाहते हैं कि 184(3) के केसेस जो लगे हुए लगे नहीं कोर्ट में क्योंकि आप चाहते हैं केस खत्म ही ना हो कभी तो बस आप खत्म कर दीजिए ना आपने बता दिया हम पढ़ लेंगे शुक्रिया मैं कह रहा हूँ आइसोलेशन में नहीं पढ़ा अच्छा अब आप कोई और पॉइंट है तो हम सुन के आपको दोबारा नहीं सुन रहे हैं दूसरा पॉइंट जो है कि जी इसके अंदर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया 18 सेक्शन 5 के अंदर कि जितने केसेस हैं वो सब खुल सकते हैं इसमें पहले जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा जी ये जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ये सिर्फ 184(3) के लिए है जी अगर किसी ने 188 के तहत रिव्यू एक्सरसाइज कर ली है उसके लिए नहीं है देयर इज नो अपील अगेंस्ट रिव्यू सो देयर वुड बी हार्डली एनी केस लेफ्ट फॉर दिस अपील टू बी एक्सरसाइज ठीक है सर आप सही कह रहे हैं लेकिन पॉइंट इज दैट इट इज द गिविंग ऑफ पावर हु कैन गिव दैट पावर अपील आप बता देना उसका इफेक्ट क्या है इसका इफेक्ट ये है कि हार्डली एनी इफेक्ट सर मुझे नहीं मालूम कि इट इज नॉट अ पावर अगेंस्ट अ रिव्यू आई एम नॉट देयर टू से कि कितने केसों में रिव्यू हुआ है नहीं बास केसों में नहीं हुआ होगा रिव्यू उसके ऊपर तो राइट खुल जाएगा फ्रॉम 1973 आपको घबराहट क्यों है हमारे काम बढ़ जाएगा ना
घबराहट की बात नहीं है। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ सिर्फ ये केस कि घबराहट क्यों में, नहीं। घबराहट देखिए से आर्गुमेंट नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन या आप तो प्रिवेल करेगा या नहीं करेगा। अब वी हैव नो टू वेज, आइदर द कॉन्स्टिट्यूशन के जो ठीक है, बार बार ये बात रिट्रेट ना करें, नहीं, समझ आप गए एक कह रहे दफा। हैं कि घबराहट तो नहीं हो रही सर, घबराहट तो नहीं हो। पॉइंट इज दैट कि आइदर कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है या नहीं देता, ये कॉम्पिटेंस है या नहीं है। सुन ली बात है ना, बार बार कहने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना। खत्म। अब हम अगले जो होंगे सुनेंगे उनको, अगर उनको आपको 20 मिनट सुनेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी है।